Now we have Raza Rabbani Saab with us online. Raza Saab could not come here in person. We were looking forward to him being here in person, but he wasn't feeling well. He couldn't come. Again, Raza Rabbani Saab needs no introduction. He's been a former chairman of the Pakistan Senate, has been one of the longest serving senators in Pakistan's history, and has been a voice of dissent, reason and conscience in the Pakistan Parliament. And I'll ask Raza Saab to speak. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chairman of the session, honorable speakers, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन हज़रात का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज की इस मीटिंग में और कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया. I would also like to take this opportunity to apologize to the organizers as well as the participants of the conference for not being able to be present physically, but as I was or am feeling under the weather, it was not possible for me to travel despite my best efforts. Nonetheless, I think the overall political situation in the country is also quite under the weather. लेकिन पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस की एक लंबी तारीख है, जिस तारीख में उन्होंने आमरीत के खिलाफ, चाहे वो सिविलियन आमरीत हो या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, एक लंबी और तवील जद्दोजहद, आइन की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी और सारी रखी. इसकी हमें जिंदा मिसाल अयूब खान की आमरीत के अंदर वकला तहरीक हमारे सामने है, और इसी तरह ज़ियाउल हक के जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डिक्टेटर रहा, उसके खिलाफ उनकी एक बड़ी लंबी और तवील जद्दोजहद रही. The legal fraternity also put up a very historic struggle against Musharraf the dictator and fought for the rule of law, the supremacy of the constitution, and the primacy of parliament. It is unfortunate, it is during this period that we see that the Pakistan bar at various levels not only struggled practically on the streets, but also took to the courts for the enforcement of various constitutional rights. We have the Sindh High Court Bar Association case in which the PCO matter was taken up. We have the Rawalpindi Bar Association High Court case in which the question of the military courts was also taken up. And we have the Sharf Faridi matter in which Article 175's implementation, that is the separation of the judiciary from the executive, was taken up. But all during this period, we found that the bar associations played an independent role. It may have been through coincidence, or it may have been through the fluke of history that some of their positions coordinated or met with positions of political parties. But the bars were never used by political parties for the furtherance of their political agenda. In fact, if I remember correctly, it was political parties that made an all-out effort to try and support the various movements that the bar
had launched or was launching for the enforcement of fundamental rights, the supremacy of the Constitution, and the sovereignty of Parliament, and against military dictatorship. It is unfortunate that now, at this present time, and with due respect to the bar associations and their representatives who are present, that it appears that the bars are being used by political parties. I think that in this case, we find that Asma was perhaps the only lawyer who fought for fundamental rights, the supremacy of the Constitution, and for democracy, but yet never affiliated herself with any political cause or with any political party. And that should be and that should be the role model for all of us. ये भी बात इस वक्त सामने नजर आ रही है कि जो मौजूदा बार एसोसिएशंस हैं, उनका कोई कलीदी किरदार इस वक्त सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए सामने उभर के नजर नहीं आ रहा। हम ये बात जरूर देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स आए गए आती रहती हैं इस सिलसिले में, लेकिन उसके अलावा कोई एक्टिव रोल जिस तरह माजी में हुआ करता था वो हमारे सामने नहीं आ रहा। हम ये भी देख रहे हैं दैट इस दौर के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जिसका ताल्लुक बार एसोसिएशन से, जिसका ताल्लुक आइन से, जिसका ताल्लुक अदलिया से है, वो लेजिस्लेशन जो है वो हुकूमत ने बार एसोसिएशंस के साथ पहले से शेयर नहीं की ताकि वो एज इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स उनका कोई इनपुट इसके अंदर जो है वो सामने आ जाता। मुझे निहायत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, and with due respect to the chair of the session, I believe that a lot of unnecessary constitutional amendments have been made in the constitution. और इन amendments का ताल्लुक जो है वो amnesty से लेके appointment of judges और appointment of judges से लेके ट्रांसफर ऑफ जजेस तक की बात सामने आती है। ये बात भी हमारे सामने है कि शायद अब नैब के लॉ के अंदर भी मजीद तब्दीली लाने की बात की जा रही है और उसमें नैब के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का टेन्योर जो है वो एक टाइम विदाउट एनी टाइम बाउंड्स जो है दैट वुड बी given. I think that the bars should be very mindful of this because this experiment has not worked with the appointment of the Chief Election Commissioner. It was given as a stopgap arrangement, but it seems that the Chief Election Commissioner is using that, or the government is using that amendment to further the tenure without bringing about a change when the tenure of the Chief Election Commissioner has expired. We are also we also, if we look at the amendments that have come about, तो हमें ये भी बात सामने नजर में आती है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया आईनी तरमीम के तहत, उसमें जो जुडिशल मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो कदरे कम है। हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर मजीद अमेंडमेंट्स हों तो उसमें इस बात को ज़रूर मद्देनजर रखा जाए कि मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स का जुडिशल कमीशन में होना व्हेन द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस इज टेकिंग प्लेस वो गैर ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये भी बात
دیکھتے ہیں کہ جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے اس میں جو ترمیم کی گئی جہاں تک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس حد تک تو وہ درست ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز کی ٹرانسفر کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور اس ٹرانسفر کے اندر وداؤٹ کنسنٹ کو استعمال کیا گیا. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری پہ قدغنیں لگاتے ہیں اور غیر ضروری طور پہ they raise aspirations against the government that perhaps the government is treading on a path which is undemocratic and is trying to pack the courts in order to facilitate its tenure. I would take this opportunity of the conference to urge all constitutional amendments that come, and I believe that this is also an appropriate forum with the law minister present in the chair to express my view that میں سمجھتا ہوں کہ مزید آئین کے اندر ترمیم کی اب ضرورت نہیں ہے اور یہ ترمیم اب 28ویں ترمیم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ان کو ترک کیا جائے کیونکہ آلریڈی 2 ترامیم آ چکی ہیں اور اس سے مزید ترمیم اگر کی گئی آئین کے اندر تو وہ اس کا جو 73 کے آئین کا اوریجنل ڈھانچہ اور سٹرکچر تھا اس میں تبدیلیاں آئیں گی اور بالخصوص جو فیڈرلزم اور پروونشل اٹانومی سے جن ترامیم کا تعلق ہے ان کو مکمل طور پہ رد کر دیا جانا چاہیے. میں آخر میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ میں خود حاضر نہیں ہو سکا اور میں منتظمین حضرات کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع زوم کے ذریعے فراہم کیا کہ میں آپ سے اپنے خیالات شیئر کر سکوں اور ان کا اظہار کر سکوں. شکریہ.